A pact signed by the Punjab and Karnataka Police Housing Corporations for developing a software has only resulted in losses and nothing else. After spending lakhs, the Punjab Corporation only got a software which fell short of even the one it was using earlier. Darshan Singh Khokhar has this special report. To develop an easier system for paying contractors, the Punjab Police Housing Corporation had joined hands with the Karnataka Police Housing Corporation to develop a software in 2008. Now, almost 3 years later, it emerges that the software earlier available with the Punjab organization was much better than the new one. In short, the whole plan has come a cropper, but at a huge cost to the exchequer. कर्नाटका के साथ हमने MOU साइन किया था, हमने खुद न्यूज़पेपर में दिया था. We signed an MOU with Karnataka Police Housing Corporation. उनका बहुत अच्छा तरह से चल रहा है. तो instead of reinventing the wheel, हमने कि जहाँ पर ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रहा है वहाँ से किया जाए. हमारे अफसर यहाँ से गए, आर्किटेक्ट गए, हमारे एससी साहब गए, अकाउंट्स के लोग गए, कर्नाटका के हर जगह देखा उन्होंने कैसे इंडिया के किसी पार्ट से क्या काम हुआ, कितना काम हुआ, कैसे हुआ, फोटो वोटो, क्वालिटी कंट्रोल सब किया जाता था, बिल भी बन जाते थे. ठीक है, तो उसकी बेसिस पे हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से MOU साइन किया. अभी हमने कोशिश किया कि जो बिल्डिंग के लिए हमें विप्रो से करें. जानते हो कितना खर्च आ रहा है? केवल स्टडी करने के लिए 10 लाख मांग रहे हैं, और जब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा समझ जाओ कि करोड़ों में जाएगा. PWD इसी बेसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है. ठीक है ना, 5-6 करोड़ रुपया खर्च कर रही है. Before signing the agreement, the Punjab Police Housing Corporation officials spent 15 lakh rupees on their Karnataka tour. That's something the Punjab staff are now finding hard to discount. उनके भी ऑफिसर्स आए, यहाँ बैठ कर किए गए. पार्टली जो काम था क्वालिटी कंट्रोल वाला वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया. दैट इज सक्सेसफुल. जो बिलिंग वाला पार्ट था, क्योंकि उनकी बिलिंग प्रोसेस डिफरेंट है, हमारी बिलिंग प्रोसेस टोटली डिफरेंट है. वो बिलिंग कैसे करते हैं, हम बिलिंग कैसे करते हैं. उनका 10% का चक्कर और उनका पार्ट पेमेंट, उनका दूसरा सिस्टम है बिलिंग का, हमारा दूसरा सिस्टम है. उसको वो नहीं कर पाए. जो TADA पर आने जाने का जो खर्चा था ना, उतना ही हमने पे किया है बस, और कोई पेमेंट नहीं किया गया है. जो उनके बंदे आए यहाँ पर ना, उनका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा 4-5 लाख. हमारे आदमी गए, उनका 30 लाख का MOU में था, लेकिन वे पेड ओनली 5 लाख. What's more, the Punjab Corporation is now thinking of tying up with Wipro. But who takes the blame for the money misspent? And who is accountable for a project which proved to be nothing but a loss-making exercise? For Darshan Singh Khokhar with camera person Sukhjinder Romana, this is Ritu Ghai, Day and Night News. Haryana Pradesh Congress Committee President Phool Chand Maulana has reportedly offered to quit from the post, taking blame for the Congress defeat in the Hisar Lok Sabha by-poll. Maulana also listed down factors responsible for Jayaprakash's humiliating loss in a report to the party high command. One of them, according to him, was factionalism. Haryana Pradesh Congress Committee President Phool Chand Maulana on Tuesday said he owed moral responsibility for the party's humiliating loss in the Hisar Lok Sabha by-election. Speculation is rife that Maulana has offered to resign from his post. अच्छा, ये जो हिसार का जो चुनाव हुआ है, उसमें जो हमारा प्रदर्शन रहा है, उसके लिए हमने एक आत्म मंथन की मीटिंग अपने कार्यालय में बुलाई थी, और उसमें साथियों ने जिनकी खास तौर पे वहाँ ड्यूटी थी, चुनाव में जिनकी लगाई गई थी, या कैंडिडेट, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हमने कांग्रेस हाईकमान को भेज दी हैं. अल्टीमेटली मैंने भी मॉरल ग्राउंड पे इस हार की जिम्मेवारी ली है. रेस्ट इज इंटरनल मैटर ऑफ द पार्टी एंड इट इज फॉर द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू टेक एक्शन. Maulana, in a report to the Congress High Command, reiterated Congress candidate Jayaprakash's charges that senior Congress leaders Birender Singh, Union Minister Kumari Shelja and Minister Kiran Chaudhary were responsible for his defeat and not the Anna factor. Maulana said it was up to the party high command to decide on the action to be taken against leaders indulging in anti-party activities. कैंडिडेट ने एक रेजोल्यूशन भी पुट किया था, और वो रेजोल्यूशन हाउस ने अडॉप्ट कर लिया, और रेजोल्यूशन भी हमने भेज दिया है. The Hisar defeat had triggered a blame game in the Congress. A few congressmen, including Jayaprakash himself, had accused a group within the party of working against him. Now, Maulana's report to Haryana Affairs in charge, B.K. Hariprasad, has refurbished those charges.
For Kirandeep, with camera person Kuljinder Sood, this is Ritu Ghai, Day and Night News, Chandigarh. Meanwhile, INLD's Ajay Singh Chautala today demanded the resignation of Bhupinder Singh Hooda. Chautala, who finished second in the Hisar Lok Sabha by-poll, said if anyone was responsible for the Congress poor show, it was Hooda, and he too should submit his resignation. On the ensuing Adampur and Ratia by-poll, he said INLD was fully prepared for the two elections. हिसार के चुनाव परिणाम के बाद हमने जो बातें कही थी उसके परिणाम आप लोगों के सामने आने शुरू हो गए। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और जैसे ही हिसार की फुटेज दिल्ली दरबार में पहुंचेगी तो ये इस्तीफा मुख्यमंत्री को भी देना पड़ेगा। वो नैतिकता के नाते तो अब तक ना हार स्वीकार कर रहे हैं और ना ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, परंतु दिल्ली दरबार में जैसे ही वो फुटेज पहुंचेगी सीसी कैमरे की, उसके बाद ना केवल स्वीकार करेंगे बल्कि इस्तीफा भी देना पड़ेगा। Centenarian marathoner Fauja Singh won't have a spot in the Guinness Book of World Records after all. The record keeper says it cannot be sure that he was born in 1911. The 100-year-old Fauja Singh attracted worldwide attention when he completed the Scotiabank Toronto Waterfront Marathon in over 8 hours on October 16. But Guinness World Records has said it won't recognize Fauja Singh as the world's oldest marathoner because he can't show a birth certificate from 1911. Fauja Singh's British passport shows his date of birth as April 1, 1911. A letter from Indian government officials states that birth records were not kept in 1911. 3 days before the marathon, Fauja Singh claimed another 8 records for 100-year-old men in distances from 100 meters to 5,000 meters. It appears these records will be recognized by World Masters Athletics. But there's one thing you can take away from Fauja Singh. He has now become the oldest man to star in a PETA ad campaign. He has joined the ranks of celebrities such as Sir Paul McCartney and Alicia Silverstone by appearing in the I Am a Vegetarian ad series started by the People for the Ethical Treatment of Animals. Bureau Report, Day and Night News. Festivity is in air, markets are abuzz and people are preparing for the Festival of Lights in high spirits. Government has exhorted people not to burst crackers and keep the environment clean, but that is no deterrent for people from purchasing crackers and obviously bursting them. This festival may be all about fireworks and fun for people, but it's not the same for birds and animals. Dogs and cats cower in fear as birds spend a sleepless night on their perches, with some even falling victim to the airborne firecrackers. And while people flock malls and shopping centers to buy apparels, sweets and gifts in a gala mood, traffic snarls have brought life in urban areas to a halt. Joining us in the studios for a discussion on Diwali celebrations are A.S. Chahal, Chairman of Haryana State Pollution Control Board, G.S. Bal, advocate whose nephew lost an eye during Diwali celebrations, Dr. J.C. Kochar, veterinarian and a member of the Society for Prevention of Cruelty to Animals, Rahul Gupta from the Global Environment Society, and R.S. Kuman, SSP Operations, चंडीगढ़ पुलिस। थोड़ा सारे दा स्टूडियो विच बहुत-बहुत स्वागत है। मिस्टर बल, मैं तुहाडे कोलों शुरू करना चाहांगी। असी अजकल कर रहे हैं प्ले सेफ एंड स्टे सेफ दिवाली दी, बट कुछ साल पहला तुहाडे अपने जिहड़े नेव्यू हैगे ने उन्हां दी पटाकियां चलांदे होए ही लॉस्ट वन आई, ये होया किवें? दस जी के he purchased crackers manufactured by one of the leading companies, that is Cock brand, और एटम बम का उन्होंने नाम दे के these are the boxes which I would like to highlight। ये boxes दे ऊपर
ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਟ ਗਿਵਸ ਐਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ then thereafter they started publishing on the boxes itself ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸਸ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇजेस ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਓਨਲੀ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਲਿਪ ਇਨ ਦੀ boxes and which the children opened the box and they can used easily to throw ignore it it away. ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ they say that after igniting a cracker retreat back by 7 meters and it is practically impossible ਕਿ ਜੇ ਇਸ cracker ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ by the time it explodes ਤੁਸੀਂ 7 ਮੀਟਰ no person can come back ਰਾਈਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਆਈ ਹੈਡ ਓਪਨਡ ਏ ਕ੍ਰੈਕਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਟੌਪ ਪਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਨਾ ਕ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਲੇ ਐਂਡ ਗਮ ਇਜ਼ देयर ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਪੱਕ ਕੇ ਇਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਪੀਸਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਸ ਪਲੱਗ ਔਰ ਟੌਪ ਪਲੱਗ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਲ ਪੀਸਸ ਦੇ ਫਲਾਈ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ the expert had Central Forensic Lab. They tested it. One of the fragments weighing about half a gram that flew up to a distance of 50 feet. ਹਾਂਜੀ So you can imagine its gravity if even if a person is standing at 20 or 30 feet और वो आके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ splinter ਉਹਦਾ if it hits his eye so I can't be safe. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਕੁਮਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੀ ਮਿਸਟਰ ਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਐਕਟ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ 7 ਮੀਟਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਅਗਰ ਅੱਖ ਵਗੈਰਾ ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟੱਡੀਡ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ effectively so that there is no danger when people are playing with these type of crackers. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲਾਅ ਦੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ देयर वेरियस पैरामीटर्स they have been kept but how far they ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਟਾਕਾ ਪਊ ਉਨਾ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ this is why it is called atom bomb and it becomes quite attractive but when whether it comes up to those parameters जो साडे इंस्टीट्यूशनल्स ने जिन्होंने इन्होंने सर्टिफिकेट दिते हुए हैं whether they are able to implement that and real ground पे जो क्रैकर अवेलेबल है that is in accordance with rules and regulation that is a big question बड़े नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ illegally ਵੀ ਜਿਹੜੇ crackers ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ this is a big problem ਕਿਉਂਕਿ if I am not wrong ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਤਰਾਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫॉर ਅ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੋਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਵ them licenses for that all the things are in accordance with rules and regulation and are conformity with the law absolutely ਹਾਂਜੀ ਜੀ